what is meant by interrupt? So we have seen the this one. We have seen about the stack and subroutine. They are important thing, and it has different types of functionality to be performed. Suppose if I want to implement the concept of stack and subroutine, we need to have this functionality to be implemented. In what circumstances we need to implement the concept of the stack and the subroutine. Suppose if you have to model software in which we need to divide my software into different modules and want to give each module to different individuals, we need to have the concept of the subroutine. So each subroutine can be assigned to different individuals, and the administrator or some leader of the particular group or that one software engineer that can combine that process and can build up all the process into one, combined into one particular software. So this is a thing we usually do in the company, and all of these things we need to have particular this one module, and each module has to be divided into different groups of people, and each process has been assigned to individual tasks, and each individual, after completion of each individual task, we need to perform this one compilation of all the this one modules. So in this way, we need to have some interrupt in the program. Why it is important? Interrupt. Suppose if I'm reading in my room and somebody call in my somebody knock my door. So while I'm reading my books, I'm doing some work. I'm just doing some work, but one of my friends just knock my door. So I just go to meet my friend and just say hello to him or her. That is the interrupt. That is interrupting my process. Now, my process is reading my book. I am in between the reading my book, so some interrupt occur, and after that we need interrupt. So I need to go with there, and this one. This is the process of interrupt. So interrupt can be different types. Might be interrupt. The process of interrupt might be the interrupt can be I can tolerate. Some interrupt I can be tolerate. Suppose if I have some interrupt. Suppose somebody is some bat is chipping nearby my window. Say I can. So without the maybe some disturbances might be there, but with that particular interrupt, the whole process is not terminated. But if somebody has just knocked my door very this one loudly, I have to go to the door, but it will disturb I will not able to read. But somebody has not some very this one little noise is coming. I am not able to hear that one. So that particular interrupt I can be ignored. Based on this one, we can have the different types of interrupt. This is basically example of the day-to-write interrupt. We have seen that one. In same way, in microprocessor also we can have some interrupt, which we can ignore that interrupt, and again we cannot ignore that particular interrupt. Based on that, we can divide the different types of interrupt. And again, why we say that the process of that particular interrupt is asynchronous. Why it is asynchronous? That particular interrupt can be occur in any instances. Suppose if I have a instruction, suppose we have the particular instruction. That is suppose this one particularly it has some 4 clock cycle. Particularly in the program, in any of the clock cycle, I can have that particular interrupt. That particular interrupt can be occur in first clock cycle, or it can be happen in the second clock cycle, and it can happen in the 3 cycle. Without any synchronization of the clock cycle, I can have in any point of the time we can have the interrupt. That is not compulsory. And interrupt can be occur in the one. And particularly if we talk about the microprocessor 805, the interrupt process will be generated from the outside world. Outside world means
the external devices, the input-output devices. From that particular input-output devices, interrupt can be occurred. That is, the process will start. Process of the interrupt will start from the input-output device that is connected to that particular microprocessor. So interrupt can be start from the any output and input devices, and it can be start in any point of time. Whether I can start from the first clock, suppose we first clock cycle, second clock cycle, third clock cycle, and so on. So in any point of time, interrupt can be occur, and interrupt can be occur from any external devices such as your this one, any input devices, output devices. We can have this one. So interrupt can be divided into the two types of the maskable and non-maskable. So delay, the maskable is I can ignore that one. The maskable can be I can delay that one. If I delay that particular interrupt, that particular instruction, up series of instruction execute कर रहा है, but in that particular point of time, some interrupt has occurred. I can delay that interrupt without hamper my instruction set of instruction. That is called the maskable. I can delay that one. Some no कर रहा है, थोड़ा सा sound ज़्यादा नहीं दे रहा है. I can ignore that one. I can delay that one. I can wait for some time because that not hamper my whole process. But if somebody has knocked very hardly, I can disturb my reading. That is the not that particular interrupt. I need to go to the particular this one. No, I can talk that one. Whatever the whatever the friend is telling, I need to listen to him. That is the we cannot delay that one. So based on these two types, or we can divide that. One is the maskable. That is we can delay that one particular interrupt, and another one is the non-maskable that cannot be delayed. This one. So we have this one. We have different types of interrupt that can be. Suppose might be in process of execution might be some maskable. I need to have some maskable, and again I can have the non-maskable interrupt that can be occurred. This one. If non-maskable is occurred, then it cannot be delayed. And again, we have two types again interrupt, and also we classify into the one vector and non-vector. Vector means the address of the service routine is hardware. Hardware means already assigned. So vector means already the address of the service already hardware. Hardware की बोला because while we manufacture this one, Intel ने जब manufacture किया i05 microprocessor, already some address is assigned. We need to study in later part on this topic. Some address is already assigned. The RST 5.5, RST 6.5, IST 7.5, some address is there. IST 5.5 का corresponding code दिया होगा. उधर में उसके corresponding address है. उसमें already company has assigned some address. Whenever the interrupt can occur, interrupt has to be occur in that particular address line. Interrupt होने के बाद particular instruction जाएगा, IST को enable करेगा particular address में जाएगा. Already that particular address is already assigned while manufacturing by that particular company, Intel. If I talk about Intel, i05, the manufacturer, that is already assigned. And again, if we talk about the non-vector, the address of the subroutine needs to be supplied externally. I need to supply externally. Whenever some interrupt has occurred, I need to give. If this type of interrupt has occurred, just go into this particular location. Interrupt होने के बाद interrupt होगा, उसके बाद कुछ generate होगा, कुछ information generate होगा. कौन सा interrupt होगा, तो particular जाने के लिए some क्या है, इसका meaning है ये है. I can draw this one. Suppose some part of the execution, some part is execution. Instruction ये execute कर रहा है, and particular in this location, some interrupt has occurred. So I need to go to somewhere that is called we need to the interrupt service provider का table है, vector
वेक्टर ISBT भी बोलते हैं, इंटरप्ट वेक्टर टेबल भी बोलते हैं, वो टेबल IBT भी बोलते हैं उसको, इसे में भी होगा। दैट मीन्स कहाँ में जाना है, इंटरप्ट होने के बाद कहाँ में जाना है, देयर इज पर्टिकुलर एड्रेस, ये पर्टिकुलर एड्रेस कहाँ में जाना है। So this particular address, this is 400 IS or something, that one, it can be assigned. So if I say that RST vector होने से IST 5.5 IST 5.5 इसका कार्य बॉडी एड्रेस एक होगा, उसमें चले जाए। But if it is non-vector, then whenever the interrupt is occur, I need to assign some address. इधर में assign करना पड़ेगा, एड्रेस assign करना पड़ेगा, एड्रेस assign करने के बाद whenever the particular interrupt is occur, I need to go to the particular instruction, particular address line ही जाके वो वाला interrupt का जो भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से return to back to the normal part of the execution. This is called the one is the vector, one is the non-vector. We need to manually assign करना पड़ेगा non-vector में, और vector में I don't need to manually assign the address of the subroutine, and this is already hardware in by the company assign. जो company है वो already assign किया होगा, RST होने से कौन सा address में जाएगा वो सब already है, वो वाला हम लोग करें. So this is, we can divide one into my interrupt into two types. One is a maskable and non-maskable, and again the interrupt can be divided into the vector and again the non-vector. Vector means the address is already hardware, and non-vector I need to manually assign that from the user. User से manually assign करना. So an interrupt can be considered to be emergency signal. So why it is called the emergency signal? Because I'm executing some set of instruction. This is normal one, and again whenever some emergency is occur, I need to respond to that particular emergency. So it is called the emergency signal. So emergency के बाद ये आने के बाद इंटरप्ट आने के वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नहीं जनरेट नहीं होगा. जो भी इंटरप्ट के बाद में जो भी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन that is already in your program, this is all the program is nothing but a set of instruction. तो set of instruction ने आप एग्जीक्यूट किया, फर्स्ट इंस्ट्रक्शन जनरेट किया, सेकंड इंस्ट्रक्शन जनरेट किया था, इंस्ट्रक्शन जनरेट किया, and again some interrupt has occurred in this particular set of the program. So in that particular one, whenever that interrupt signal is generated, it is called the emergency signal, because it will go back to the particular type of instruction whatever the interrupt is occur. कोई सा interrupt का मीनिंग है कि एक जगह में वो जाएगा, वो जगह वाला जो भी इंस्ट्रक्शन होगा वो एग्जीक्यूट करेगा, उस खत्म होने के बाद तो इंटरप्ट जो है उसके बाद वाला इंस्ट्रक्शन से वो एग्जीक्यूट करना पड़ेगा. So this is called the emergency signal. So microprocessor should respond to it as soon as possible. Why it is important? So आप ये वाला एग्जीक्यूट करने में some meaningful information नहीं भी हो सकता है. Whole part of the program will execute the meaningful information. ये इधर में होने से नहीं होगा. तो particular suppose I need to calculate the this area of my different area of the circle. तब area of circle इधर में निकाला है, तो area of the rectangle इसे निकालना है. I need to compare the between this one, area of the circle and area of the triangle, area of the rectangle and area of the square. तो area दोनों को कंपेयर करना है आपका जो ये प्रोग्राम है ना. So if this one इधर से तो मिल जाएगा, area of the my rectangle मिल जाएगा, and in here interface occur. So the part of the instruction after this interrupt line would not be able to generate till the interrupt is finished. So this is if any interrupts occur, I need to the microprocessor should
soon as the interrupt is occur, the microprocessor task is to respond to the particular interrupt. Respond कैसे करेगा? Respond कैसे करेगा? Respond करने का meaning है कि particular interrupt का जो signal है वो execute करेगा, particular interrupt वो generate करेगा, particular generate करने के बाद वो खत्म होने के बाद the return statement has to be come back to the particular address from where the interrupt has just came out. Interrupt just खत्म हुआ उसके बाद वाले instruction से वो generate करना पड़ेगा. So this whole process has to be very much quickly. The microprocessor task is this: whenever the interrupt has occurred, interrupt has to be occurred. Interrupt to होगा ही, because in some point of time some interrupt is also very much essential to give some meaningful information. And again, if we don't want the interrupt also, some interrupt might be occurred due to the hardware failure, due to the disturbance of external one, due to the temperature of that particular circuit. You're using some circuit, circuit होने से गर्म हो गया, गर्म होने के बाद circuit ठीक से काम नहीं कर रहा, तो interrupt might be occur. So these are different types of thing with which we can have the interrupt. Sometimes interrupt can be useful, and sometimes interrupt might be not be very much useful. So, but the microprocessor task is to respond to the interrupt. Respond. एक interrupt आ गया, respond नहीं करके चुपचाप बैठा रहने से काम नहीं होगा. I need to respond to that particular interrupt, and after the completion of the particular interrupt, I need to again process the whole my instruction. बीच में खत्म हो जाएगा. इंटरप्ट रेस्पॉन्ड नहीं करने से आप पार वाला इंस्ट्रक्शन जनरेट करना ही पड़ेगा. तो इंटरप्ट को रेस्पॉन्ड करना है. माइक्रोप्रोसेसर टास्क इज टू रेस्पॉन्ड टू दैट पर्टिकुलर इंटरप्ट. So this is task of the microprocessor. So when the microprocessor receives the interrupt signal, the interrupt signal आ गया. Suppose in this process interrupt signal is arrived. So respond कैसे करेगा? So I need to have some table that is called the suspend the current executive program and jump to the interrupt service routine provider. ISR करके एक routine है to the respond to the incoming interrupt. So सेमी में जो बोला था, ये इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3 जनरेट किया. So सब करने के बाद ये पूरा एक इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन 10 है. My set of instruction is I have a 10 set of instruction and I just complete 3 instruction. After completion of the 3 instruction, some interrupt has occurred. Then I need to suspend. Some interrupt occur हो गया तो suspend करना है कि 4, 5, 6, 7, 8, 9 को suspend करना है. If any interrupt has occurred, suppose interrupt आप ये fast 2, 3 जब कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, वो execute कर दिया, execute कर ये भी execute किया, ये भी execute किया. But in the case of the 4th instruction, some interrupt has occurred. So if the microprocessor find any interrupt has occurred, then you will suspend in that point of time. In that point of time, suspend करेगा. वो instruction number 4 वो suspend करा. करने के बाद the task is to jump to the interrupt service routine करके एक routine में जाएगा. ISR में जाएगा. ISR में ही instruction. ISR is nothing but an interrupt service routine. A routine में ही वो particular instruction, वो particular interrupt का क्या प्रोसेस करना है वो उधर में डिटेल लिखा हुआ है. सपोज इंटरप्ट RST 5.5 आने से RST 5.5 पर्टिकुलर ISR है, इंटरप्ट सर्विस रूटीन है. तो उसका पर्टिकुलर एग्जीक्यूट करेगा. उसके एग्जीक्यूट करने के बाद वो खत्म करके इधर में जाएगा. तो आई नीड टू गो दिस पर्टिकुलर सर्विस रूटीन में जाएगा. दैट इज कॉल्ड द interrupt service routine ISR. That is called the ISR.
So you will respond to the incoming interrupt. Then after the coming to the respond करेगा वो particular execute करेगा. execute करने के बाद particular जो भी कहाँ से जाए वो particular instruction say number 4 में आएगा वो normally execute 1 2. Now I will able to execute now 4 instruction, 5 instruction, so on up to the 10 instruction. This is process whenever any interruptions occur. So each interrupt would mostly probably have its own SAR. So particular जो भी interrupt का जो भी कोई सा भी interrupt that can be maskable, that can be non-maskable, that can be vector, that can be non-vector, it can be anything. But particular interrupt का corresponding इस SAR होगा. SAR नहीं होने से क्या execute करेगा वो confuse होगा. इंटरप्ट तो होगा. इंटरप्ट तो कौन सा इंटरप्ट जनरेट करेगा, कौन से वाला इंटरप्ट से वो जनरेट करना है. जो वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है उधर में इंस्ट्रक्शन लिखा है, आईएसआर में इंस्ट्रक्शन लिखा है पर्टिकुलर इंटरप्ट का करेस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन क्या जनरेट करना है. दैट पर्टिकुलर विल बी इन द आईएसआर. एवरी इंटरप्ट का पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन दैट विल बी अवेलेबल इन द आईएसआर. सो आईएसआर इज इंपॉर्टेंट. सो इस इंटरप्ट विल बी प्रोवाइडेड इज आउट इन आईएसआर. तो हर इंटरप्ट का अलग SAR होगा. So every interrupt will have different ISR. So I can say that different interrupt will have different ISR, and particularly I need to generate the instruction that is inside my ISR. That is my. Okay. So again, next one is this is already I have discussed. The interrupt can be immediately I can respond and I can delay. If it is this one, we have maskable. That is, if I can delay, that one is called the maskable. It is immediately that kind of delay is called the non-maskable, and so on. We can have this one maskable or not. It can be masked. It can be delay or not. Based on that, we can respond to the particular interrupt, and accordingly, which type of interrupt is generated, accordingly the microprocessor will respond to particular interrupt. So delay करने वाला को delay करेगा, delay नहीं करना है, immediately respond करना है तो immediately response करेगा. तो क्या कौन सा depend है particular interrupt में depend. तो कौन सा interrupt generate होगा उसके corresponding कौन सा वाला respond करेगा. delay करके respond करेगा या immediately respond करेगा. That is the will decide by the microprocessor, and will decide by microprocessor based on the types of the interrupt. So, and again, two types of the one is the vector already known by the microprocessor. Then is already this address is already assigned. Particular interrupt का corresponding address कहाँ में जाना है, and already decided by the this microprocessor. That is called the my vector, and again a device will supply the vector to the microprocessor. This is called the non-vector one. We have two types, maskable and non-maskable, and one is the vector and non-vector. This is already we have discussed. So the maskable one is the maskable that can be delayed. That this one. Non-maskable data, maskable interrupt process is controlled by a single flip-flop inside the microprocessor. So this is controlled. The maskable interrupt process in this one is controlled by a single flip-flop. We have seen you have studied about the flip-flop. It has some input. It has some output. And corresponding with the different combination of this one, we can generate this one. And this is also called a less. Another name of the flip-flop is called the less. So it is just how are you going to this one enable that particular flip-flop or this one devices or this one layers particular semiconductor devices, and this is simple as semiconductor provider. So how are you going to enable? We have these
two types of instruction. One is the EI instruction and one is the DI instruction. So EI instruction बोलने से enable the instruction. So if I have the enable the interrupt, EI being enable that particular EI direct देने से सपोज पार्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जनरेट किया पार्टिकुलर उसके बाद इंटरप्ट इधर में इंटरप्ट आने वाला है सपोज मैंने असाइन किया है सो आई नीड टू दिस वन आई नीड टू if I want to generate the interrupt then I need to first enable that particular interrupt that will be enabled by assigning this one EI इंस्ट्रक्शन को आपको लिखना पड़ेगा EI को enable करना पड़ेगा so I need to enable that particular this instruction EI instruction. So I need to generate this particular EI instruction. And again, to disable after completion, EI जो generate करेगा और particular interrupt generate होने के बाद खत्म होने के बाद फिर से return back आएगा. So I need to again disable. I can disable that one interrupt in that particular point of time. So we can enable the interrupt and we can disable the interrupt. So I-05 as a single non-maskable interval, the non-maskable is not affected by rule of the interrupt enable. But for the non-maskable interrupt, it is not affected by value of the interrupt of the enable. So whatever the value of the interrupt, whether I can enable or not, it is not able to affect the value of the interrupt. So for this one, non-maskable interrupt is not affected by the value of the interrupt. So whatever the value is assigned to enable the particular flip-flop. So this is the two types. So we have this I05 interrupts. We have 5 interrupt input. So one is the INTR. The INTR is also called as the non-vector interrupt. And again, INTR is the maskable. So maskable होने से EI और DI instruction PI पे enable करेगा और disable करेगा. And again, we have this one RST 5.5, IST 6.5, IST 7.5. You have already seen this one. You have already know this type of interrupt while studying the architecture of I05. Pin diagram में भी है, EA भी pin diagram में है, interrupt है. Interrupt होने के बाद एक signal है. Name the signal after the interrupt is completed. Some signal has to be generated to know that completion of the particular interrupt. Which is that particular input line. Input line एक generate करना पड़ेगा, enable करना पड़ेगा. तो interrupt होने के बाद एक particular instruction generate करना पड़ेगा. कौन सा है? If I anybody has know that one, बहुत सारा interrupt है. तो interrupt होने के बाद एक particular pin है, उसको enable करना पड़ेगा. So that I can know that the particular interrupt है successfully interrupt खत्म हुआ है. खत्म हुआ नहीं हुआ तो उसको बताना है ना. पर suppose interrupt होने के बाद simply this one microprocessor will not able to understand whether this will be completed, successfully completed हो गया interrupt जो generate successful interrupt generate हुआ है कि नहीं पता नहीं चलेगा. So आप ये वाला interrupt करने के वाले एक particular pin है, उसको आपको enable करना है. तो that particular instruction कौन है? particular कौन सा वाला pin enable करना पड़ेगा? Anybody know? Just chat box में drop करो answer. Manish Pal, Abhijit Singh, कहा गया? If you know the answer, you can respond to my question. Interrupt का कैसे पता चलेगा? इंटरप्ट ठीक से एजुकेट हुआ है या नहीं ये कैसे पता चलेगा? उसको रेस्पॉन्ड तो देना पड़ेगा ना. So how will this one
microprocessor will understand that particular interrupt is completed or not. Anybody? Fahalul, Islam, Ankur Kumar, Giri, Anjali Chaudhary, Abhijit Inamul, Manish. Sir, can you go back to the PDF once so that we can see that? Sir, it is not in my PDF, in particular in there. Suppose my question is, some interrupt has occurred and interrupt का जो भी response है ISR वो complete है, generate किया, generate करने के बाद एक pin diagram को enable करना है. After the enable of the particular pin diagram only, I can say that particular interrupt जो है ना successfully खत्म हुआ है. एक सिंपल है, क्या बोलते हैं, सपोज आप किसी को मैसेज भेजते हैं, फ्रॉम 1 to 2 लोकेशन, मैसेज रिसीव करने के बाद क्या भेजता है, तू क्या उसको क्या भेजता है, हाउ वन विल नो दैट पर्टिकुलर टू जो मैसेज है वो टू में पहुंच गया है, हाउ यू गोइंग टू नो दैट वन. सपोज from one location, one of the individual has sent some mail to the particular location number 2. एक चिट्ठी भेजा, एक लेटर भेजा, letter has been sent to particular location number 2. तो particular location के जो भी इधर में जो भी individual है वो कुछ तो भेजना पड़ेगा ना, so that one will think that the particular letter has been received. क्या भेजता है, ये तो कंप्यूटर नेटवर्क में तो सिग्नल रिसीव्ड का सिग्नल आता है रिसीवर को, उसको क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं. यस सर, उसको एक्नॉलेजमेंट बोलते हैं ना. एक्नॉलेजमेंट मिलने के बाद इसे पता चलेगा कि पर्टिकुलर लेटर हैज बीन रिसीव्ड, दैट इज कॉल्ड एक्नॉलेजमेंट. तो एक्नॉलेजमेंट के लिए बहुत सारा मेथड है. वी हैव टू हैंड शेकिंग थ्योरम भी बोलते हैं. एक से एक एक्नॉलेजमेंट मिलने से भी किसी इंस्टेंसेस में वो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन गलती भी वो बोल सकते हैं. पर्टिकुलर जो भी है हम लोग ये पर्टिकुलर मेथड तो यूज करता है कि एक लेटर भेजने के बाद जो भी रेस्पोंडेंट है वो इसको एक एक्नॉलेजमेंट का, आई एम रिसीव योर मैसेज. किसी इंडिविजुअल आप मैसेज करने से भी आपको बोलता है क्या, या आई एम रिसीव योर मैसेज, ये एक्नॉलेजमेंट भेजता है. इन दिस वे whenever any interrupt is occur, I need to send back some interrupt back to the micro, so that I will show that that particular interrupt has occurred. So I will enable the INTR, INA interrupt करके acknowledgement, INTR, INTA A वाला acknowledgement है, A वाला acknowledgement है, वो उसको enable करना पड़ेगा. So in this way we can have this one. So this is authoritative vector that is I need to not to manually assign the address that is already provided by the company, and so whenever this is generated particular एक address में जाके वो वाला execute करेगा. So this is the my particular instruction. So कैसे होगा, suppose एक example है, suppose एक example देखता हूँ. We have seen that my this I05 is having a 8-bit microprocessor. So suppose कैसे हो सकता है, तो ISR we know that my ISR contain some set of instruction होगा. तो कौन सा जगह में वो जाके रुकेगा, suppose नेक्स्ट स्लाइड में भी है तो पहले बताते तो. सो 5.5 है, तो 5.5 है. सपोज वन एग्जांपल बोलता हूँ. सपोज मैंने 8 बिट है क्योंकि मैंने इसको 8 से डिवाइड इनटू किया, so it is nothing but 44. So suppose this already, if I generate this interrupt ISD
रेस्टार IST यानी रेस्टार है 5.5 तो 5.5 कौन सा वाला रेस्टार सिग्नल जनरेट करेगा पर 5.5 ही जनरेट करेगा 5.5 है करेस्पोंडिंग 44 जब 44 एड्रेस में ही जाएगा सो पर्टिकुलर आपका प्रोग्राम है तो इंस्ट्रक्शन 1 जनरेट किया इंस्ट्रक्शन 2 जनरेट किया इंस्ट्रक्शन 3 जनरेट किया और इंस्ट्रक्शन बोल सके तब इंटरप्ट आ गया तो इंटरप्ट आने के बाद मैंने ये वाला RST 5.5 जनरेट किया तो कौन सा वाला ISR में कौन सा एड्रेस बहुत सारा होगा एड्रेस कैन बी 0 to my 00FF तक होता है स्टार्टिंग इज 0002 00FF कोई सा भी में my वेक्टर हो सकता है सो पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन कोड कहाँ में जाएगा तो by looking this one तो 44 में डायरेक्ट जाएगा तो 65 होने से पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में ही जाएगा पर्टिकुलर लोकेशन ही में ही जाएगा और 7.5 होने से पर्टिकुलर एक लोकेशन में ही जाएगा तो इस हैव द डिफरेंट लोकेशन सो इफ आई गिव IST 5.5 it will go to one location if I give this IST 5.5 it will go to another location if I give IST 7.5 it will go to another location so location is there the location is a different one for different instruction it will go to different address in the my ISR and this is called the maskable and we have one of the non-maskable interrupt that is called the trap is only one which is having the non-maskable and this automated vector है तो I need no need to no need to assign this one manually assign नहीं कर रहे उसका particular trap बोलने से particular एक location में ही जाएगा जब generate होगा so if we talk about the 805 interrupt we have this type of maskable and we can divide this one as a vector can be so INR sub maskable है only the trap is the non-maskable and again the vector sub ये वाला vector है only the INTR is my vector interrupt. So this is important. Interrupt vector and vector table. So if I say there's some vector one, suppose IST ये जनरेट करे तो ये vector है. तो vector है तो some this one address I need to assign address to किसी एड्रेस में जाएगा आप असाइन नहीं करने से भी एक एड्रेस में तो जाएगा तो how you going to have this one so I need to have some vector table तो vector table में जाएगा तो what is my vector table vector interrupt vector table is nothing but in which it is table where corresponding interrupt का corresponding address assign होगा so the vector table is nothing but it will contain the address and at that particular instruction it will contain the address and particular instruction in the ISI table so this will contain by ISI and this table is also called as a interrupt vector table so if I have an interrupt vector table so we need to have some interrupt vector so this interrupt vector is nothing there is a pointer to where the ISI is stored in the so ISI, if I say that for different interrupt, I will have a different ISI. So interrupt vector is a pointer to the ISI. Particular ISI का point क्या करना है? That interrupt vector is a pointer to where the ISI is stored. तो ISI जहाँ में store होगा, of the particular IST 6.5 का होने से 5.5 का so interrupt vector is a pointer interrupt vector is a pointer है so it will point to where that particular ISI का particular address ISI का particular memory में जहाँ में memory में store करे उसका location दिया होगा तो location so is a location so 200 IS में है so interrupt vector is just a pointer from this particular you will know that particular ISI कहाँ में है memory में जो वो पता होगा that particular vector is a pointer to where the ISI is stored in the memory so memory में बहुत सारा ISI होगा
तो ISI एक ही इंटरप्ट का अलग का ISI होगा, तो डिफरेंट इंटरप्ट का डिफरेंट ISI होगा, तो कैसे उसको उसके पास जाएगा? तो मेमोरी में बहुत सारा स्कैटर है, अभी मेमोरी में स्कैटर करके रहा है, तो उसको लोकेशन चाहिए, तो लोकेशन ढूंढने के लिए आई नीड सम वेक्टर that is nothing but just like my pointer, just like the C pointer, that is will know the particular address of that particular ISI where it is locating in my memory. So this will be given by the interrupt vector. The interrupt vector is a pointer to where the ISI is storing the memory. So all the interrupt vector or otherwise might be vector, might be non-vector are made to a memory area called an interrupt vector table. तो IBTR करके एक टेबल है, वो मैप करता है. तो IBTR is usually located as PS7 0 से स्टार्ट करता है, 00 से स्टार्ट करता है और usually 000 to 00FF तक जाता है. So IBTR is usually located in memory places starting from this one 000 to 00FF तक जाता है. The purpose of the IVR is to hold the vector that is redirect the warning to the place where the interrupt is arrived. So interrupt होने के बाद it will redirect to the places where it is occurred to the particular location. उसके address IVR में address होगा. So particular इधर में interrupt होने के बाद particular address that is already is a set of the एड्रेस कहाँ में वो जनरेट होगा, इधर में जनरेट होगा, तो ये would be interrupt कहाँ में होगा वो पता चलेगा. So proposal is to hold the vector that is redirect the moment to the right places where an interrupt is. तो कहाँ में, तो ये RST 545 होने के लिए ये वाला एक interrupt जनरेट करा. So in this way right places IST 545 तो इधर में ही जाएगा, तो IST 6.5 होने से ये पार्टिकुलर ये लोकेशन में ही जाएगा. पार्टिकुलर लोकेशन में जाने का एड्रेस दिया है, सब में है, ठीक है. सो पार्टिकुलर IST 5.5 होने से ये वाला पार्ट में जाएगा, 6.5 में ये वाला पोर्शन में जाएगा. सो द पर्पस ऑफ द BTA इज टू गो टू द पार्टिकुलर वेक्टर वेयर इट इज अराइव. तो अराइव 5.5 अराइव हुआ तो इधर में जाना है, 6.5 अराइव हुआ तो इधर में जाना. So ISB is divided in several blocks. 7 block होगा, 7 set of indexes addresses होगा. So each block is used by one of the interrupt is called one of the interrupt to hold this vector. So particular interrupt generate करने के लिए एक block होगा, तो particular block, particular instruction एक block होगा. Suppose इधर से इधर तक एक particular ISTR 5.5 का एक block होगा, उसके बाद a particular block होगा, you will be go by this one IST 6.5 and again this one IST 7.5 so on for different interrupt that particular block. This block is will generate by the particular interrupt. So this is called the, and this block is used by one of the interrupt that is IST 5.5 IST 6.5. This block is would be all that vector by this particular interrupt. So process देखो, the interrupt process should be enabled using we have so interrupt process enable करने के लिए I need to generate the for a non-vector interrupt process. For a non-vector interrupt process, for generation of this non-vector interrupt process, first I need to enable the EI. EI enable नहीं करने से interrupt ही नहीं होगा. I need to enable this particular EI instruction. Generate the EI instruction. That is, if I enable this by giving this particular EI instruction, that particular interrupt process will be started. So first step is there to enable the EI. EI instruction has to be enabled. Then after that, the I05 save the interrupt during the execution of every second. So every instruction में वो check करेगा कि interrupt हो रहा है क्या. Suppose some
instruction might be having a 4 clock cycle, 5, 6 cycle, 7 cycle, some so on. Call instruction में 14 होता है, 14 या 7, 18 होता है, 18 होगा call instruction. So बहुत सारा instruction cycle होता है. So every instruction cycle में वो check करेगा कि particular instruction ये cycle में interrupt हो रहा है कि नहीं, इधर में भी हो रहा है कि नहीं, इधर में भी हो रहा है कि नहीं. I need to check. Whenever interrupt has occurred, then interrupt को assign जो है ना, वो ISI particular ISI में जाएगा, और ISI will be pointed to the particular vector called as the IBT vector. तो particular block में जाएगा, block वाला generate करेगा return back to the normal execution. So program execution जाएगा. So this is particular location. So this is the thing. So if there is an interrupt, the microprocessor will complete the execution and start a restart sequence. So whenever there is interrupt, will complete the execution. So suppose particular third instruction में interrupt आ गया, वो first I need to complete that particular instruction. एक particular instruction तो complete करना है. Interrupt का मीनिंग है कि नहीं है कि पर्टिकुलर वो इंस्ट्रक्शन आप चलाए उसको कंप्लीटली खत्म करने के बाद ही नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जाओ. तो 3 इंस्ट्रक्शन खत्म, सपोज पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोग्राम, दिस इज सेट ऑफ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम है, दिस इज ए प्रोग्राम मींस इट कंटेन्स ए set of instruction number 1, instruction number 2, instruction number 3 and so on. तो instruction number 3 execute करने के टाइम में इंस्ट्रक्शन में इंटरप्ट आ गया, सब प्रॉब्लम है, बट आई नीड टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन. मिडल में तो खत्म कर मत छोड़ना, उसको खत्म करना है. तो खत्म होने के बाद पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नंबर 4 जब जनरेट होगा, दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन नंबर 4 will not be generated and will start a restart sequence. The restart sequence to go back to the particular instruction, particular interrupt का उधर में जाएगा. So restart sequence generate करेगा. The restart sequence reset the interrupt flip-flop and activate the interrupt acknowledgement INTR. So ये क्या हुआ? First, ये प्रोग्राम है, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन हुआ, ये पर्टिकुलर माय IBT है एक, उसके बाद ये पर्टिकुलर मेरा एक पर्टिकुलर ऑपकोड होगा, opcode for my any type of RST का particular IST n बोलता हूँ. N can be different types of IST हैं. Suppose IST 0, IST 1, 2, 3 करके एक IST है. restart बोलते हैं इसको, RST बनते restart. ठीक है, तो कैसे करना है? So कैसे करेगा? प्रोग्राम एग्जीक्यूशन देगा. So ये पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन किया, पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन 1 जनरेट किया, 2 जनरेट किया, 3 जनरेट किया. जनरेट होने के बाद इधर में सम इंटरप्ट हैज ऑकर्ड, इधर में इंटरप्ट होगा. तो इंटरप्ट होने के बाद दैट पर्टिकुलर कंट्रोल हैज टू go to that particular location. तो पर्टिकुलर लोकेशन जाएगा, इधर में जाएगा. तो कौन सा वाला लोकेशन में जाएगा? So I will see the particular opcode for IST 0 है, RC 0 है, तो IST 0 के corresponding एड्रेस में जाएगा. This is particular opcode RST 0 का एड्रेस है, पर्टिकुलर एड्रेस दिया होगा, नेक्स्ट स्लाइड में भी दिया हुआ. पर्टिकुलर IST 0 के कौन सा एड्रेस में जाने हैं वो पर्टिकुलर दिया है. ठीक है, सो IST 0 में ये जाएगा. तो जाने के बाद क्या करेगा? So it will have some block बोला ना, तो ब्लॉक, तो मैक्सिमम एक ब्लॉक
8 बाइट का ही होगा, 8 बाइट से ज्यादा नहीं एग्जीक्यूट नहीं नहीं होगा, 8 बाइट का ही लॉक होगा। तो उसके ज्यादा सपोज सम इंटरप्ट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है कि इट विल हैव मोर देन 8 बाइट, 8 बाइट होने के लिए 8 बाइट हो सकता है, सम इंटरप्ट माइट बी occurring for very much long duration or this one for so 8 बाइट से ज्यादा तो वो एक ये वाला इंटरप्ट 8 बाइट से ज्यादा नहीं। so in that case I have another option also. In that case I have another option. ऐसे होगा, we have seen the jump operation, jump operator, jump करके particular एड्रेस दे दो, एड्रेस 100 आइस दिया, तो 100 आइस वाला इधर में जाए, तो एक ब्लॉक से दूसरा ब्लॉक में भी शिफ्ट कर सकते हैं by using jump operator given in this IVT. तो jump operator करके एड्रेस दिया के इधर में जाए। So after that I can have this one. So after that completion, the completion होने के बाद return this one RET signal generate करेगा, that is called a return. तो रिटर्न होने के बाद ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में जनरेट करेगा। तो पर्टिकुलर जहां में फर्स्ट ये इधर से शिफ्ट करने से पहले जो भी एड्रेस है, एड्रेस हैज बीन ऑलरेडी सेव इन माय स्टैक। स्टैक का मीनिंग है वही है, स्टैक में ही एड्रेस स्टोर होता है, तो एड्रेस में वो पर्टिकुलर ऑलरेडी स्टोर इन द पर्टिकुलर एड्रेस। क्योंकि समटाइम्स मैनिपुलेशन होने के बाद पता नहीं कहां से स्टार्ट किया, कहां से खत्म हुआ है पता नहीं। ऑलरेडी माय एड्रेस मींस has been saved in my stack before going into this particular location. So after completion of this particular, so if 8 byte instruction ज्यादा है, I can have the jump one and go to the another block में जा सकते हैं, but at the end return will be generated, जब return होगा particular जहां में step हुआ था उधर से start करके next instruction I can execute. This is the flow of the driver, your flow of the execution of this vector signal. So we have this different for this IST signal. So we have this different opcode of one of the IST. So IST 70 से IST 7 तक है, उसके corresponding different types of opcode है, corresponding we generate करके we need to have this one. So for the acknowledgement, so ये खत्म होने के बाद I need to activate the interrupt acknowledgement signal, because ये वाला activate होने के बाद वो पता चलेगा कि particular खत्म हुआ और restart the sequence है, तो flip flop को restart किया, वो particular खत्म हो गया, interrupt खत्म हो गया, वो continue generate हो गया, so I need to activate this INTA signal. So you will acknowledge the signal. So activate the interrupt acknowledgement signal. So from this signal, I come to know that particular interrupt का signal खत्म हो गया. So this is the process. So this is jump statement. So jump के address to next location on the stack, jump to the appropriate entry in the BR. So I already said that I have only the 8 byte का एड्रेस ही मेरे पास है, तो 8 बाइट से ज्यादा है तो I can have the jump I can generate it with by using jump give the address तो particular एड्रेस में ही जाएगा, jump का particular 100 आइस में दिया है तो 100 आइस में next block जहां में next block where 100 आइस is residing उधर में जाके हम लोग कर सकते हैं. So this is the whole process. So IBTR entry must be directed to the process to accelerate subroutine. This is the auto care. The subroutine must include the EI to enable the interrupt process. At the end of the subroutine, the return address, return the execution to what the program is. So कहाँ से खत्म हुआ था, कहाँ में प्रॉब्लम हुआ था, जहाँ में प्रॉब्लम हुआ था, जो सब ये इंटरप्ट होने के बाद कहाँ में खत्म हुआ तो उधर से पास में जाना है. तो
return instruction, return the execution to where the program has interrupted. So ये देखो I05 non-vector interrupt process. So we have this RST0, RST0, RST1, RST2, RST3, RST4. This is nothing but this is equivalent to call instruction. RST बोलने से restart करना है ना, restart कहाँ से करना है, ये particular मेमोरी एड्रेस से ही हम लोग को जाओ ऐसे बोल रहे हैं. So call instruction RST होने से RST जो है that will go to particular location, this particular address line में ही जाएगा, ये 000 तो RST1 बोलने से ये particular location में ही जाएगा 00 RST2 बोलने से 0010 ऐसा करके जाएगा. So I05 recognize I restart instruction 0 to I05. Each of this will send the execution to a predetermined hardware location. That is already predefined location. That is already at vector 1. So RST 0 होने से particular ये वाला location में ही जाए. It is already assigned. उसके बाद रेस्टा सीक्वेंस कैसे करेगा. रेस्टा सीक्वेंस इज मेड अप ऑफ 3 म्यूचुअल साइकिल. तो अभी जो रेस्टा है ये रेस्टा सीक्वेंस है RST0, RST1, RST7 तक रेस्टा सीक्वेंस है. 3 मैसेज साइकिल है. फर्स्ट मैसेज साइकिल क्या होता है, मास्टर सेंड द INTR सिग्नल, सेंड द RTN सिग्नल करने के बाद व्हेन द INTR इज एक्टिव द माइक्रोप्रोसेसर रीड द इनपुट लाइन एक्सपेक्टिंग टू रिसीव द इंटरप्टेड सिग्नल. Then the opcode of the specific instruction जाएगा. तो INTR receive active करने के बाद the microprocessor read the data lines expecting to receive कर पाएगा. उसके बाद interrupted devices से जो भी opcode है, corresponding opcode है, वो particular instruction में जाएगा. So it will first send the signal to INTR signal, send INTR signal first message second में. But after the when this is active, it reads the data lines expecting कैसे data line में ये वाला active करेगा by going to this particular opcode. जो भी particular opcode IST0 के particular opcode ये particular line address में ही जाएगा. particular opcode में ये particular instruction instruction generate करेगा. So in the next second and third message cycle, the 16-bit address of the next instruction is set on the address. Then the microprocessor jump to the address associated with the specific instruction. So next cycle में क्या करेगा, first cycle में ही आपको generate करके आपको generate का particular instruction में चला जाएगा. तो next में क्या कर सकता है, next में क्या है, is a 16-bit address of the next instruction is set on the. So next instruction जो भी है वो save करके जाएगा. तो particular instruction का second of message cycle में the 16-bit address of the next instruction is set on the state, so that particular next instruction कौन सा जगह में जाएगा वो पहले से उसको मालूम होगा. So फिर से वो वाला particular address में आप return back कर पाएगा. So this is in the second on message cycle, the 16-bit address of the next instruction is set on the stack. So in this particular stack, from this location, I will know that particular instruction कौन सा particular next instruction कौन सा location में store किया है. एड्रेस है स्टैक में स्टोर करने के टेम्पोररी. तो कहां तक गया था, वो कहां पे खत्म हुआ वो पता चलेगा जैसे. सो यहाँ में ऑपकोड जनरेट कर फाइल इंस्ट्रक्शन में जनरेट हो गया. तो सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन विल बी असाइंड द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन. सो बाय लुकिंग एट दिस स्टैक आई विल बी नोइंग दैट इन फ्रॉम नेक्स्ट instruction for the next instruction, from this particular location, just 101, I will start the executing my signal.
So this is the particular machine cycle of the IST sequence. So the location of the ISB is associated with a IST instruction. It cannot hold a complete subroutine. So the मैंने बोला particular IST instruction is limited to some 8 byte instruction से ही ज़्यादा वो access नहीं कर पाएगा. So the routine is written somewhere else in the memory. So I need to have another memory में उसको another block of memory पे मैं return करने के चाहता है. That is particular instruction is very much huge one. Then I need to have a jump statement. And particular ये address starting address उसको assign करना पड़ेगा. Jump 000. ठीक है. So this is the jump instruction to the ISA location is kept in the IIBT form. So in this way we can have this. Because the ISA sequence कोई जो ISA 0 होने से 1 होने it will be some limited amount of memory. So you कर नहीं पाया तो if I need extra memory, then I can have the jump statement by using for the calculation for this jump statement. I need to give some address. Jump होने से particular address देना पड़ेगा. वो address में ही जाके वो start करे. So this is the example of the jump and restart statement. So we can have it. So hardware generation of the RST opcode. So hardware generation. So how does the external device produce the opcode for the appropriate IST? So IST instruction के लिए कैसे how does the external device produce the opcode? Opcode कैसे produce होगा? जो opcode तो देना है. Suppose if we give the instruction, that is we give some opcode. Opcode is nothing but you will be having a hexadecimal. Hexadecimal में होता है ना opcode. So microprocessor understand only the opcode or a particular instruction. So particular instruction jump होने से भी आपका store होने से भी जो भी data transfer operator होने से भी conditional operator होने से उसके corresponding एक opcode है. Every instruction we have the 72 instruction a corresponding opcode. Why we go for the opcode? Remembering 101 is a tremendous work or very much headache thing to remember 101. So somebody I can have some opcode. So opcode 72 instruction का opcode हो सकता है. So it is very much easy to remember the opcode. Or again I can have some data. This one company can issue some data of the particular instruction of the issue कर सकता है. Problem नहीं है, ज़्यादा नहीं है. तो अगर 101 में तो problem होगा. So we have some this opcode system. तो I05 में opcode है. तो opcode जो मैंने बोला कि it's a simply collection of bits 101. So the device need to set the bits of the data bus to appropriate value in response to INT. तो INT signal आने के बाद आपको क्या करना है कि particular bits को जनरेट कौन सा bit जनरेट करने के बाद सपोज कौन सा वाला bit जब bit 10 दिया है कौन सा वाला bit जो 1 को ये सब इधर में 0 है बाकी में 1 है तो I can assign this is RST 0 10 bit का कंसीडर किया 8 bit का कंसीडर किया क्योंकि सब मैं just for time being 8 bits का कंसीडर so middle थर्ड पोजीशन में 0 है बाकी में 1 है तो ये वाला ऐसे 0 है ये वाला असाइन कर सकते हैं और अगेन थर्ड बिट में 1 है और बाकी में 1 है सब 1 1 है तो IST 1 in this way I can for different combination I can have different combination IST 0 IST 1 so in this way I can assign so device कैसे होगा कौन सा वाला थर्ड बिट को ये वाला इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा तो कौन सा वाला बिट को इनेबल करना है कंसिडर को डिसेबल करना है तो पार्टिकुलर IST का होगा IST 0 होने से पार्टिकुलर एक बिट को इनेबल करना पड़ेगा पार्टिकुलर बिट को डिसेबल करना पड़ेगा इन दिस वे फॉर डिफरेंट IST इट हैज डिफरेंट कॉम्बिनेशन तो IST 0 से 7 के लिए बहुत सारा कॉम्बिनेशन है by using that combination I will
able to get a particular IST. IST 0 होगा या 1 होगा, ये हमको पता होगा. तो हार्डवेयर जनरेशन ऑफ द RST ऑपकोड. सो कैसे डिजाइन करेगा? So this is a design of the my particular IST. ऑपकोड है, आपके ऑपकोड है तो हमको डिजाइन करना है. This is a tri-state buffer. Just before this one, just look here. तो IST5 को हमको जनरेट करना है. तो IST5 जनरेट करने के लिए आपको क्या करना करेगा? I have taken a data bit from 0 to 7 that carries the 8-bit information. 8-bit information है. So this IST5 की corresponding opcode ये दिया है कि EF है. ठीक है. तो corresponding bits में आप रिप्रेजेंट कैसे करेगा? Just look here. I need to see only this one. 5 4 3. 5 4 3. उसको ही देखना. 3 4 5 को ही देखना. So whatever your RST 0 से 7 तक suppose है. So just RST5 है. RST5 है तो वो 5 को ये लिखो. ये 3 bit है. 3 bit 5 यानी 101 है ना. So 5 means 101 is 5 in the decibel. This is nothing but my 5. तो remaining bit को 1 1 1 कर दो. And again remaining bit 2 है तो ये 1 1 कर. This is 5. This is for RST 5. So what will be my RST 1? RST 1 के लिए क्या होगा? कमेंट करो. खत्म होने वाला है 5 मिनट और मोर. नेक्स्ट में क्लास में खत्म करना है, बहुत लंबा है. RST 1 के लिए क्या होगा? कौन सा वाला कोड जनरेट करना पड़ेगा? Anybody? Please answer. Just look here and respond. RST 1 के लिए कौन सा वाला कोड जनरेट करना पड़ेगा? कौन सा कोड जनरेट होगा? हेलो, क्या होगा? आप लोग सुन रहे हैं कि नहीं हो रहा है वो भी पता नहीं चल रहा है. सुन रहे हैं सर, सुन रहे हैं. क्या होगा? So this is for the RST5. RST5 के लिए corresponding ये वाला कोड जनरेट करें. For this particular RST5, this opcode is this one. EF दिया हुआ है. ठीक है. उसके लिए corresponding bits यही है. ठीक है. नहीं CF ठीक है. नहीं I need to represent my IST1 in terms of bits. So how are you going to represent in terms of bits? This is nothing but RST5 के लिए ये representation है. RST5 होने से ये वाला representation in terms of the bits. 101 में ये ऐसे represent कर पाएगा. तो RST1 के लिए कैसे represent करेगा? That is my question. I want to represent RST1 in a stream of bits. 8 bits. Okay. 0 0 1. No wait. So in this way, I need only the 3 4 5. 3 4 5 ही देखेगा. 3 4 5 यानी 101. 1 होने से RST1 होने से just I need to change only 0 0 1 for 0 RST 0 0 0. This is RST 0 and so on for different IST. ठीक है. So we have this tri-state buffer and this one tri-state buffer वो digital electronics में ज़्यादा पड़ेगा. Just tri-state buffer
का मीनिंग है कि this is simply used for storing your data for time being. This one, right? This one. So कैसे स्टोर करेगा आपका डाटा जो है, कैसे स्टोर करेगा एंड करेस्पॉन्डिंग आपको आउटपुट कैसे आएगा देखो. Suppose I need to represent this RST5 by using this tri-state buffer. So look here, you see only my 4th bit is 0. 4th bit जो है ना 0 है. 0 means it is connected to the ground. तो connected to the ground है तो ये वाला मेरा ये वाला 0 होगा. But again it is connected to the my some ball. ये ball वाला है, ये वाला plus 5 ball और ऐसा कोई से ball है. तो बाकी जो भी है ये 1 जनरेट होगा. 1 1 2 3. So इसको पहले ये वाला and INTR is always time INTR is RNTA is always time low. So to enable that one, you again have this one. इसको enable कर, उसको note करना पड़ेगा. Why it is having a note? INTA is always low. Active होने के लिए low होता है. Active होने के लिए हमेशा low होता है. So for enable of that one, I need to have this one not operate. This not operate. So low को 1 होने के लिए ये वाला enable करने के लिए उसको not करना पड़ेगा. So this is the example of my hardware generation of the OCO. ठीक है, या तीन बस किया है. I can continue in the next class. So just a minute, I want to see the attendance. I will keep my today class PPT approved. So Kiran Chitria is absent, Mantan Das is absent, Adas Tiwari is absent, Biharul Raskar is absent, Arnab Pek is absent, Mohammad Rahman is absent, Prakash Nath is absent, Sangramita Dori is absent, Saurabh Das is absent, Uras Ingoli present. You can read now. If I miss your name, you can comment down in the chat box. If I जो absent नहीं है वो मैंने बोल दिया है, so just comment in the chat box your name. जो SM का नाम ही दिया है, जो present है वो already I have taken the attendance. Okay. Okay, then we can meet in the Friday, or I can give the timing on the next class. So just go through the textbook and try to read the thing, and we'll provide the PPT today. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Oi, Farnul.
Hello.